हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तापी नर्सिंग एजुकेशन। आज हम जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर 2022 में कंडक्ट हुआ पेपर सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ओल्ड पेपर सोल्व करोगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में आसानी रहेगी। हमने इस चैनल पे सभी एग्ज़ाम के लिए पेपर सोल्व करवाई है, वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकल ड्रग कॉज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। कौन सी एंटी ट्यूबरकल ड्रग लेने से यूरिन का कलर रेड ऑरेंज कलर का हो जाता है? आइसोनियाजिड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर रिफाम्पेसिन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिफाम्पेसिन। रिफाम्पेसिन ड्रग लेने से यूरिन का कलर रेड ऑरेंज कलर देखने को मिलता है। Absence of bowel sound and abdominal distension after abdominal surgery indicates। सर्जरी के बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन और बोवेल साउंड का एब्सेंट होना ये किसकी ओर इशारा करता है? हेमरेज, इंटरसेप्शन, पैरालाइटिक इलियस या फिर फ्लैचुलेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पैरालाइटिक इलियस। Unwanted but unavoidable pharmacodynamic effects of a drug at the therapeutic dose are known as। थेरेप्यूटिक डोज का अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट को क्या कहेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट या फिर आइडियोसिंक्रेसी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साइड इफेक्ट। व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड 2 लीटर द कंडीशन इज कॉल्ड। एमनियोटिक फ्लूइड 2 लीटर से ज़्यादा होता है, उसको कौन सी कंडीशन कहते हैं? ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, बैग ऑफ वाटर या फिर एमनियोनाइटिस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इन इंडिया इज। बर्थ रजिस्ट्रेशन कितने समय में हो जाना चाहिए? 7 डेज, 21 डेज, 14 डेज या फिर एनी ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 21 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज पेप्टिक अल्सर डिसीज। पेप्टिक अल्सर डिसीज होने में कौन सा ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है? स्टेफाइलोकोकस, कोरिनीबैक्टीरियम, हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी, स्ट्रेप्टोकोकस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इन आइडेंटिकल ट्विन where the fetus share common कोरियन the number of placenta is। आइडेंटिकल ट्विन में कोरियन जुड़ा हुआ होता है, इनमें प्लेसेंटा कितना होता है? 1, 2, ग्रेटर देन 2 या फिर 2 एंड फ्यूज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1। स्पोर्ट्स पर्सन एनहेंस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी बाय टेकिंग। स्पोर्ट पर्सन मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी किस प्रकार बढ़ाते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड, कैफीन, विस्की या फिर हाई कैलोरी फूड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। द साइलेंट फीचर ऑफ नर्सिस रिकॉर्ड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नर्स के अनुसार कौन सा फीचर शामिल नहीं होगा? रिटर्न विथ इंक ऑन पेपर, कंप्लीट क्लियर एंड कंसाइज, काउंटर साइन बाय डॉक्टर या फिर शुड नॉट हैव ओवर राइटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, काउंटर साइन बाय डॉक्टर। द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू डिफेंस इटसेल्फ अगेंस्ट अ पैथोजेनिक एजेंट। ह्यूमन बॉडी में पैथोजेनिक एजेंट को डिफेंस करने की क्षमता को क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, इम्यूनिटी या फिर अडेप्टेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इम्यूनिटी। फिफ्थ डिसीज इज ऑल्सो नोन एज। फिफ्थ डिसीज किसको कहा जाता है? मम्स, एरिथेमा इन्फेक्शियोसम, मीजल्स या फिर रूबेला। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एरिथेमा इन्फेक्शियोसम। इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फेलोपियन ट्यूब में कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? फनेल, एम्प्यूला, इस्थमस या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एम्प्यूला। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर किसको कहा जाता है? हिपोक्रेटस, जोसेफ लिस्टर, लुइस पास्चर, सोलोमन वर्क्समैन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जोसेफ लिस्टर। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन।
मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 10 अक्टूबर, 7 अप्रैल, 5 जून। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 अक्टूबर। शोल्डर डिस्टोसिया इज मैनेज बाय। डिलीवरी के टाइम पे शोल्डर डिस्टोसिया है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? लवसेट मैन्योर, लियोपोल्ड मैन्योर, मैक रॉबर्ट मैन्योर या फिर बर्न्स मार्शल मैन्योर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैक रॉबर्ट मैन्योर। अ नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, 46, 24, 48। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 46। यहाँ पे पैर में पूछा जाए तो 23 आएगा, मगर यहाँ पे कोई पैर नहीं पूछा गया, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल्स इज। मेल्स में मम्स होता है तो कौन सी मेजर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है? वीकनेस, स्टेरिलिटी, ईयर एक, मेनिंजाइटिस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेरिलिटी। पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज। पल्स प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन एट्रियल एंड वेनस प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग एंड सुपाइन ब्लड प्रेशर। नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। The main aim of nursing care plan for assisted mobility at bedside would be। पेशेंट बेड साइड पे है, उसको मोबिलिटी में असिस्ट करना है तो नर्सिंग केयर प्लान का एम क्या होगा? परफॉर्मेंस एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज डेली, प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। The role of nurse is comprehensive management plan for depressed patient will essentially include। डिप्रेस पेशेंट में नर्स का प्लान ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? प्रिस्क्राइबिंग एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड कोर्स ऑफ डिसीज, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, ऑर्डरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर पेशेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक्सेप्ट। दी गई ऑप्शन में से सभी को रोका जा सकता है एक को छोड़ के। वेंटिलेटर एसोसिएट न्यूमोनिया, कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कैन्यूला एसोसिएट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ बेड सोर इन अ पेशेंट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सभी कंडीशन में बेड सोर हो सकता है, एक को छोड़ के वो बताना है। ड्रग रिएक्शन, prolonged sitting or lying in same position, poor circulation to the affected part, constant pressure again a particular part. Right answer is option A, drug reaction. Out of the following which is not a major intracellular electrolyte? कौन सा मेजर इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सोडियम। हाइपरवोलेमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाइपरवोलेमिया किसके कारण नहीं हो सकता? अर्ली रीनल फेलर, कंजेस्टिव हार्ट फेलर, डायरिया, एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डायरिया। नर्सिंग मेडिकेशन एरर्स मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन हॉस्पिटल आर। हॉस्पिटल में कौन सी नर्सिंग मेडिकल एरर देखने को मिलती है? एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोज एंड infusion rate, error related to wrong identification of patient, error related to wrong route of drug administration, error related to wrong dose being administration. Right answer is option A, error related to wrong dose and infusion rate. Most of the medication error occur because of a flow at which stage? Most of the medication error कौन से स्टेज में होती है? प्रिस्क्राइबिंग, ट्रांसक्रिबिंग, dispensing, administering. Right answer is option D, administering. Which term is used to denote normal heart rate in a patient?
पेशेंट में नॉर्मल हार्ट रेट को क्या कहा जाता है? टेकिकार्डिया, साइनस रिदम, ब्रेडिकार्डिया, असिस्टोल. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साइनस रिदम. Recording of vital signs of patient by nursing professional is required. नर्सिंग प्रोफेशन में पेशेंट के वाइटल साइन क्यों रिकॉर्ड किए जाते हैं? टू कीप पेशेंट हैप्पी, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट, टू फिल द मेडिकल रिकॉर्ड, टू हैव डेटा फॉर रिसर्च. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट. A fever is indicated when body temperature rise over oral temperature of. ओरल टेम्परेचर कितने से ज़्यादा होगा तो उसको फीवर है ऐसा बोलेंगे? 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, 99.5 डिग्री फ़ारेनहीट, 97.8 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहीट. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 99.5 डिग्री फ़ारेनहीट. इन अ पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज असेस बाय. पेशेंट में फ्लूइड बैलेंस असेस कैसे किया जाता है? मॉनिटर ऑफ वेट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, इनपुट आउटपुट चार्टिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. थीम फॉर दिस ईयर नर्सिस डे 2022 इज. 2022 की नर्सिस डे की थीम्स क्या थी? A voice to lead, invest in nursing and respect right to secure global health. A voice leads to a vision for future healthcare. A voice to lead, nursing the word to health. None of the above. Right answer is option A. A voice to lead to invest in nursing and respect right to secure global health. The Nurses Day is celebrated to commemorate. Nurses Day क्यों मनाया जाता है? फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थ, एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा बर्थ, एनिवर्सरी ऑफ द ओपनिंग फर्स्ट साइंटिफिक नर्सिंग स्कूल. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थ. द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन एक्सेप्ट. WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है, उसमें कौन सा डायमेंशन नहीं आएगा? मेंटल, फिजिकल, वोकेशनल, सोशल. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वोकेशनल. यहाँ पे वोकेशनल है वो डायमेंशन में नहीं आएगा. ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी अफेक्टेड बाय लाइफस्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट. दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डिसीज लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है एक को छोड़ के? कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैंसर, हाइपरटेंशन या फिर टाइप 1 डायबिटीज. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइप 1 डायबिटीज. हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस बाय नर्सिस इंक्लूड. हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी में जिनका नर्स द्वारा रेगुलर प्रैक्टिस किया जाता है उनमें क्या शामिल है? मोटिवेटिंग पेशेंट्स फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर, रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, काउंसलिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स या फिर ऑल ऑफ दिस. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. द यूरिनरी आउटपुट ऑफ पेशेंट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ. पेशेंट में यूरिन आउटपुट का सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है? सिवियरिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन या फिर स्टेटस ऑफ मेडिकेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन. The fluid and electrolyte balance in a patient can be easily assessed by. पेशेंट में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, यूरिन आउटपुट, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी. पेशेंट की कौन सी केयर करने के लिए ग्लव्स पहनना ही पड़ेगा? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फिजियोथेरापी, रिकॉर्डिंग वाइटल्स. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ. नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज एनीवेयर बिटवीन. नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट कितना होता है? 0.5 to 1.5 ml per kg per hour, 0.1 to
0.5 ml kg per hour, 1 to 5 ml kg per hour, 1.5 to 5 ml kg per hours. Right answer is option A, 0.5 to 1.5 ml kg per hours. Which of the following is not a micronutrient? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? विटामिन ए, जिंक, प्रोटीन, विटामिन सी. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटीन. Among fats, the category that should be minimally consumed for a healthy body are. हेल्दी बॉडी के लिए कौन सा फैट मिनिमम खाना चाहिए? मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स, poly unsaturated fats, saturated fats, none of these. Right answer is option B, polyunsaturated fats. Among the following, which is the correct measurement of urine output? यूरिन आउटपुट मेजर करना है तो कौन सा पैरामीटर से चेक करेंगे? 30 ounce, 1 cup, 300 ml, 1 quart. Right answer is option C, 300 ml. The most common micronutrient deficiency in India is. इंडिया में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी देखने को मिलती है? आयोडीन, जिंक, विटामिन ए या फिर आयरन. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आयरन. The recommended antenatal visits for pregnant women in India are. इंडिया में एंटीनेटल विजिट कितनी होती है? 4 visit including 1 as soon as pregnancy is suspected and 1 at term. Once a month, once in 2 months, every 2 weeks. Right answer is option A, 4 visit including 1 as soon as pregnancy is suspected and 1 at term. Feeding colostrum to newborn is essential because. न्यूबॉर्न को कोलोस्ट्रम क्यों पिलाना चाहिए? It is good in taste, it is nutrient dense and high in antibodies and antioxidant. It is a tradition in India. It induces breast to produce more milk. Right answer is option B. It is nutrient dense and high in antibodies and antioxidant. Scurvy is caused due to deficiency of. स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन सी. बहुत ही इजी सवाल है. विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस. विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो सकता है? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, बेरीबेरी, ड्राई आइस, माउथ अल्सर. Right answer is option A, rickets and osteomalacia. Pulse oximeter is used to measure. Pulse oximeter से क्या मेजर कर सकते हैं? ऑक्सीजन saturation of blood, pulse rate, both A and B, none of this. Right answer is option C, both A and B. पल्स ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन saturation of blood और पल्स रेट दोनों मेजर कर सकते हैं. रेंज ऑफ मोशन डिपिक्ट्स. रेंज ऑफ मोशन क्या दर्शाती है? एक्सरसाइज दैट मूव्स इच मसल्स एंड जॉइंट, आर्च ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स. नॉन ऑफ दिस. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सरसाइज दैट मूव्स इच मसल्स एंड जॉइंट. For a patient with severe hearing disability, the nurse should. Severe hearing disability वाले पेशेंट के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? Face the patient and speak clearly and distinctly. Shoot and use exaggerating mouth movement. Keep silence. Communicate with family only. Right answer is option A. Face the patient and speak clearly and distinctly. Trochanter roll is used to. ट्रोकेंटर रोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज रिकम्बेंट पोजीशन. प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज रिकम्बेंट पोजीशन. प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन. प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन.
राइट आंसर इज ऑप्शन बी, prevent external rotation of hip when patient is recumbent position. wrist drop is the condition in which wrist drop किस कंडीशन में होता है? फ्लेक्सर मसल्स ऑफ wrist and digit not work, extensor muscle of wrist and digit do not work, abductor muscles of wrist and digit do not work, abductor muscles of wrist and digit do not work. Right answer is option B, extensor muscles of wrist and digit do not work. The best nursing practice to prevent ventilator associated pneumonia is, वेंटिलेटर एसोसिएट न्यूमोनिया को रोकने के लिए सबसे अच्छा नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है? रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन, एक्सेलेंट ओरल केयर एंड सबग्लोटिक सक्शन, promoting early mobility, all of this. Right answer is option D, all of this. Ideal solution for replacement of intravascular volume non-hemorrhagic would be, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को रिप्लेस करने के लिए आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड सब्स्टिट्यूट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या फिर कोलॉइड सॉल्यूशन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अब्रप्शो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर अटोनिक यूट्रस? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अटोनिक यूट्रस. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिटोसिस? बॉडी के कौन से सेल में कांस्टेंट मिटोसिस डिवीजन होता है? नर्व सेल, स्टमक सेल, मसल सेल या फिर रीनल सेल्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टमक सेल. The total lung capacity in a healthy adult male is approximately, हेल्दी मेल में लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है? 500 ml, 50 ml, 600 ml या फिर 6000 ml? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 6000 ml. Which of the following is an example of an isotonic intravenous solution? कौन सा एग्जाम्पल आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन का है? डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन, 10% डेक्सट्रोज, 0.45 NaCl, रिंगर लैक्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिंगर लैक्टेट. WHO declared the 2019 novel coronavirus outbreak as a public health emergency of international concern, PHEIC on. WHO ने नोवल कोरोना वायरस 2019 को इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित कब किया था? जनवरी 30, 2020, जनवरी 12, 2020, जनवरी 23, 2020 या फिर जनवरी 27, 2020? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जनवरी 30, 2020. In which of the following client is a rectal temperature most usually contraindicated? नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन से पेशेंट में रेक्टल टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते? क्लाइंट who has had a myocardial infarction, client with Parkinson disease, client who is prone to seizure, client with neuropathological associated with diabetes? Right answer is option A, client who has had a myocardial infarction. In meiosis, how many daughter cells are produced? मियोसिस में कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं? 8, 6, 4, 2. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 4. Which hormone produced by the ovaries inhibits the secretion of FSH and LH? कौन सा हार्मोन ओवरी में से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स FSH एंड LH को इनहिबिट करता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, GnRH? Right answer is option C, inhibin. The enzyme pepsin digest which dietary component? पेप्सिन एंजाइम कौन से डाइटरी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोटीन.
द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू कौन सा है? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू या फिर मसल्स टिश्यू? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कनेक्टिव टिश्यू। क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग इज कंसर्न विथ। नर्सिंग में क्वालिटी एश्योरेंस किससे संबंधित है? एडेक्वेसी ऑफ केयर, प्रैक्टिस रेटिंग, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। डिफॉर्मिटी ऑफ बोन रिजल्टिंग इन स्प्रेंजल शोल्डर। कौन से बोन के कारण स्प्रेंजल शोल्डर देखने को मिलता है? स्केप्यूला, रेडियस, अल्ना, टिबिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्केप्यूला। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने इन्वेंटेड की थी? लुइस पास्चर, पाउल एनगेज, एडवर्ड जेनर, जॉन स्नो? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। अमीबायोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। अमीबायोसिस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? फीको-ओरल रूट, वेक्टर बोर्न, पेरेंट्रल, एयरबोर्न? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फीको-ओरल रूट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? विटामिन डी किसमें ज़्यादा मिलता है? लीवर, चीज, एग yolk, cod liver oil? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, cod liver oil। 3D, diarrhea, dementia, dermatitis are the characteristic of which deficiency disorder? 3D, डायरिया, डिमेंसी एंड डर्मेटाइटिस कौन से डिसीज की कैरेक्टरिस्टिक है? थायमिन, बियोटिन, नियासिन, रिबोफ्लेविन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नियासिन। सर्जिकल ऑपरेशन जिनमें एब्डोमिनल वॉल में होल्ड किया जाता है, जिनसे डिस्चार्ज है वो इलियम के माध्यम से निकल जाए, उस सर्जरी को क्या कहेंगे? इलियोस्टोमी, गैस्ट्रोस्कोपी, एंथ्रोस्कोपी, वाजेक्टोमी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इलियोस्टोमी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स कंप्लेंट रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन? अलग अलग कंप्लेंट दी गई है, कौन सी कंप्लेंट को इमीडिएट इंटरवेंशन करना चाहिए? 40-year-old client with sharp severe pain due to renal stone not relieved by analgesic. 35-year-old client with fracture femur complaint of sharp chest pain. Both A and B. A client ulcerative colitis with having lower abdominal pain. Right answer is option B. 35-year-old client with fracture femur complaint of sharp chest pain. In a psychiatric ward, which of the following patient should the nurse assess first? साइकेट्रिक वार्ड में सभी पेशेंट हैं, तो कौन से पेशेंट को सबसे पहले असेस करना चाहिए? अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक सिजोफ्रेनिया विथ इज विड्रोवन, अ पेशेंट विथ एन एक्यूट अटैक ऑफ सीवियर एंजाइटी, अ पेशेंट विथ एग्रोफोबिया who stay in her room all day, a patient with depression complaint of constipation? Right answer is option B, a patient with an acute attack of severe anxiety. Medical treatment of coronary artery disease includes which of the following procedure? कोरोनरी आर्टरी डिसीज वाले पेशेंट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सी होगी? कार्डियक कैथेटराइजेशन, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या फिर परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। हेमलिच मैन्यूअर इज यूज्ड टू। हेमलिच मैन्यूअर किसमें यूज करते हैं? क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे, रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम आई, रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम ईयर, नॉन ऑफ दिस? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे। कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ। कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व्स कंप्रेस हो जाती है? रेडियल नर्व, मेडियल नर्व, अल्नर नर्व, एक्सिलरी नर्व? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेडियल नर्व।
In case of needle stick injury, the first response of the nurse should be needle stick injury होती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? Start preparing a report, talk to senior, wash the site with soap and water, check your immunization status now. Right answer is option C. Wash the site with soap and water. The following articles are essential component of crash cart in hospital except. आपने हॉस्पिटल में क्रैश कार्ट ट्रॉली देखी होगी, उस ट्रॉली पे क्या रखा नहीं जाता? डिफिब्रिलेटर, रिसक्सिटेशन मेडिसिन, मटेरियल फॉर पेरिफेरल इंटरवेनस एक्सेस, स्टेशनरी आइटम. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेशनरी आइटम. An error in measuring blood pressure may result because of which of the following? ब्लड प्रेशर मेजर करते टाइम पे कौन सी एरर देखने को मिलती है? The size or position of cup is wrong. Patient's arm is positioned above or below the level of heart. The sphygmomanometer is pressed too firmly against brachial artery. Any of this. Right answer is option D. Any of this. Apical pulse of a patient can be assessed by. किसी पेशेंट में एपिकल पल्स कैसे मेजर किया जाता है? Palpating the radial artery, palpating the brachial artery, auscultating the heart, palpating the carotid artery. Right answer is option C, auscultating the heart. Bedside assessment of respiration by nursing professional include all of the following except. नर्सिंग प्रोफेशनल द्वारा रेस्पिरेशन असेसमेंट करते टाइम पे कौन सा पॉइंट ध्यान में नहीं रखा जाता? रेस्पिरेटरी रिदम, पैटर्न एंड रेगुलरिटी, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू चेस्ट, एफर्ट एसोसिएट विथ ब्रीदिंग. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू चेस्ट. What should be the nurse immediately decision on physician order of given 1 unit of blood intravenously? फिजिशियन के द्वारा पेशेंट को 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के लिए कहा गया है तो नर्स का सबसे पहला डिसीजन क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रिपेयर द पेशेंट, कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड क्लैरिफाई ऑर्डर विद द फिजिशियन प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन. ऑप्शन बी, सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द हेड नर्स नर्सिंग सुपरवाइजर, collect blood unit and transfuse the patient, clarify the order with physician, prepare the patient and collect. Right answer is option D, clarify the order with physician, prepare the patient and collect. When should be baseline vital sign be recorded before initiate blood transfusion? ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करने से पहले बेसलाइन वाइटल साइन कब नोट करनी चाहिए? विद इन 30 मिनट, विद इन 1 आवर, within a 1.5 hour या फिर within a 2 hours. Right answer is option A, within a 30 minutes. A nurse should check the availability and patency of an intravenous access line. एक नर्स को इंट्रावेनस की अवेलेबिलिटी और पेटेंसी कब जांच करनी चाहिए? बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वर्ड, आफ्टर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वर्ड, while transfusing the blood, not required to be. Right answer is option A, before bringing blood unit to ward. Evidence-based clinical practice. Recommendation of nursing care of acute stroke. Patient includes all of the following except. एक्यूट स्ट्रोक वाले पेशेंट में एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस करते टाइम पे कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा? रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रायज, एनेबल डिलीवरी ऑफ रिलेवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट, observe the patient, rapid transfer to acute stroke unit for ongoing assessment and provision of further treatment. Right answer is option C, observe the treatment. The first priority in emergency department management of acute burn injury would be. बर्न इंजरी वाले पेशेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या होगी? क्लीनिंग दी वोन्ड्स, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, मेंटेनिंग एयरवे, breathing and circulation, starting medication. Right answer is option C, maintaining airway, breathing and circulation. In clinical situation, which method for hand hygiene is to be preferred?
क्लिनिक में हैंड वॉशिंग की कौन सी मेथड प्रीफर की जाती है? वॉश विथ सोप एंड वाटर, यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, क्लीन योर हैंड ओनली when it is visible soil. None of this. Right answer is option A. Wash with soap and water. For hand hygiene procedure, which parameter are most important? हैंड हाइजीन में कौन से पैरामीटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है? टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग, टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, both A and B. Which nursing intervention would best prevent development of deep vein thrombosis, pulmonary embolism in a post-surgical patient? सर्जरी के बाद पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रोकने के लिए कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सही रहेगा? हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, बेड मैनेजमेंट, keeping patient. Right answer is option A, hydration and physical movement of patient. A patient of anemic with hemoglobin of 7 g/% has been advised iron injection as the preferred therapy by the physician. On going given the prescribed injection by intramuscular route, the patient suddenly develops breathlessness, nausea and hypotension. What will be the most probable cause? 7% हीमोग्लोबिन वाले एनेमिक पेशेंट में फिजिशियन के द्वारा आयन इंजेक्शन की सलाह दी जाती है. इंटरमस्कुलर इंजेक्शन रूट से इंजेक्शन दिया जाता है तो अचानक सांस लेने में डिफिकल्टी, नोजिया और हाइपोटेंशन जैसी कंप्लेन देखने को मिलती है. ये सब किससे संबंधित कारण है? रॉन्ग साइट ऑफ इंजेक्शन, रॉन्ग टेक्निक ऑफ इंजेक्शन, एनाफाइलेक्सिस, हार्ट अटैक. Right answer is option C, anaphylaxis. Normal rectal temperature is typically, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर आमतौर पर कितना होता है? लेसर देन ओरल टेम्परेचर, इक्वल टू ओरल टेम्परेचर, ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर या फिर नो रिलेशन टू ओरल टेम्परेचर. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर. If a patient is complaining of orthopnea, it is best to make him. किसी पेशेंट को ऑर्थोपनिया की कंप्लेन है तो उसका सबसे अच्छा कारण क्या होगा? लाई डाउन स्ट्रेट ऑन बेड, सीट ऑन बेड इन अपराइट पोजिशन, वॉक अराउंड इन द रूम, बी इन एनी पोजिशन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सीट ऑन बेड इन अपराइट पोजिशन. द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट कैन्युला साइट इन्फेक्शन इज, कैन्युला साइट पे इन्फेक्शन रोकने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी? पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स ऑफ इंसर्शन, एंटीसेप्टिक स्किन, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ कैन्युला. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स ऑफ इंसर्शन. इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अनकॉन्शियस पेशेंट में इमीडिएट नर्सिंग केयर में कौन सा एक पॉइंट नहीं आएगा? मेंटेनिंग एयरवे पेटेंसी, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, मेडिकेशन मैनेजमेंट. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेंटेनिंग न्यूट्रिशन. अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अ पेशेंट इज, किसी मरीज में हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेटर क्या होगा? एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, fall in oxygen saturation of blood, cyanosis, hypertension. Right answer is option A, anxiety and restlessness. The first response of a nurse on noticing suspected blood transfusion reaction should be, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम पे सस्पेक्टेड साइन देखने को मिलता है तो नर्स को तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए? इन्फॉर्म द पेशेंट अटेंडेंट, कॉल द डॉक्टर, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, मॉनिटर यूरिन आउटपुट. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन. द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटेंट आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेल ऑन पेशेंट बेड विल बी, पेशेंट के बेड के साइड रेल का उपयोग क्या है?
preventing the patient from fall injury, to provide support to drip set, to help in bed hygiene management, to restrain the patient. Right answer is option A, preventing the patient from fall injury. In a patient diagnosed of having an acute anaphylactic attack, the first nursing care response would be, एक्यूट एनाफाइलेटिक अटैक वाले पेशेंट में फर्स्ट नर्सिंग केयर क्या होगी? एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, कॉल द फैमिली, लुक फॉर कॉजेटिव एजेंट, चेक द मेडिकेशन चार्ट. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन. The cardinal sign of cardiac arrest include all of the following except. कार्डियक अरेस्ट में कौन सा साइन शामिल नहीं होगा? एपनिया, dilated non-reactive pupil, cold clammy skin, absence of carotid and femoral pulse. Right answer is option A, apnea. The correct sequence of cardiopulmonary resuscitation includes. कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन की सही सीक्वेंस क्या होगी? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन. सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, एयरवे. ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एयरवे या फिर हाइड्रेशन, ब्रीदिंग एंड एयरवे. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. आपको कोई भी सवाल में कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. हमने इस चैनल पे पुराने पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें. इस चैनल पे आप नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चालू रखो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.